Hello, my dear students. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Debnath. We are discussing the fourth chapter of physics of class 9th ICSE, pressure in fluids and atmospheric pressure. The first lecture for this chapter has been uploaded. It is there in a separate playlist in the playlist section. If you haven't watched that lecture of this chapter, then first watch it and then you continue with the second lecture for this chapter. So we have discussed about thrust and pressure and also the definition of 1 Pascal, which is the SI unit of pressure. Now, in this lecture, I will be continuing from the topic other units of pressure. So the other units of pressure are bar, write down the names of the different other units, bar, and a smaller unit of bar is millibar, which is also very common. Then we have torr, TORR. These are all our units of pressure. All right. Then we have atmosphere or atmospheric pressure, जिसको हम ATM बोलते हैं. All right. And then we have mm of Hg, millimeters of Hg mercury, या फिर centimeters of mercury, या फिर meters of mercury. इन सारे यूनिट्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. And there is a separate topic, barometer, where I will be discussing where I will be discussing in detail regarding mm of Hg. ठीक है, cm of Hg and m of Hg. इनके बारे में तो हमें डिटेल में पढ़ना है. मैं डिटेल में एक सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करूंगा. एज ऑफ नाउ you just learned the different units of pressure. मैंने यहाँ पे काफी सारे अलग अलग यूनिट्स लिख दिए हैं. बार, मिलीबार, टॉर, एटीएम, mm of Hg, cm of Hg and m of Hg. Hg means mercury, हाइड्रागायरो. तो अब इनके बीच में जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज राइट देम डाउन. देखो, 1 बार इंपॉर्टेंट रिलेशंस. ठीक है, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल. पास्कल का मतलब पिछले लेक्चर में ही बताया था. पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पास्कल का मतलब ही होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इजंट इट? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बुलाते हैं. तो कई बार तुम ऐसा देखोगे कि 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है. दिस थिंग इज सेम. ये हो गया. फिर 1 टॉर, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू 1 millimeters ऑफ मर्क्यूरी. 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर. और एक काफी इंपॉर्टेंट सा रिलेशन जो बहुत एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, 1 ATM और पास्कल के बीच में रिलेशन. 1 ATM is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. ये एक इंपॉर्टेंट है. कई बार हम इस 1.013 को सिंपली हम 1 ले लेते हैं और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 into 10 to the power 5, यानी सिंपली 10 to the power 5 Pascal. कई बार देखोगे कि तुम्हें ऐसा भी मिलेगा 1 ATM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल. ये जो मैंने सिंबल दिया है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू का सिंबल है. सो 1 ATM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल. एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो दिस इज 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल. कई बार ये 1.013 को हम 1 ट्रीट कर देते हैं तो सिर्फ 10 to the power 5 पास्कल आ जाता है. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है. और mm ऑफ Hg में भी कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी बोलते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 0.76 meters ऑफ Hg. मैंने मीटर्स ऑफ Hg में बोल दिया. फिर तुम्हें डिफरेंट सेंटीमीटर और मिलीमीटर में भी कन्वर्ट तुम कर सकते हो. यू जस्ट सिंपली कन्वर्ट दिस 0.76 meter into millimeters. You will get in millimeters of Hg. You will convert this 0.76 meters into centimeters. तो तुम्हें मिल जाएगा सेंटीमीटर्स ऑफ Hg. तो ये हो गया. तो बेसिकली तुम्हें ये सब याद कर लेना है, ये रिलेशंस. ये काफी इंपॉर्टेंट है. और इसमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है विच इज दिस वन. 1 ATM इज हाउ मेनी पास्कल. ठीक है,
Now we proceed further to the topic factors affecting pressure. Write down factors affecting pressure. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर प्रेशर डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर. If you see the formula for pressure, that gives you the answer. प्रेशर का जो फॉर्मूला है, प्रेशर का जो डेफिनेशन है, तो प्रेशर का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एनी एरिया इज इक्वल टू द फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, थ्रस्ट अपॉन यूनिट एरिया. यही फॉर्मूला है ना प्रेशर का. लेक्चर 1 में ही मैंने इसका एक्सप्लेन किया था. सो प्रेशर इज F divided by A. This is a very important formula for pressure. This gives you the answer. So if I ask you what are the factors affecting pressure, the pressure depends on force. In fact, this is the thrust, the perpendicular force. Thrust पे depend करता है, and also the area of the surface on which it is acting. Force पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और एरिया पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में है, फोर्स न्यूमरेटर में. काफी इंपॉर्टेंट है. तो वो दो 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 फैक्टर्स क्या है लिखो. नंबर 1, द फर्स्ट फैक्टर इज द थ्रस्ट अप्लाइड, एंड नंबर 2, द एरिया on which the thrust is applied. Now, if I have to explain both of these points कि thrust पर डिपेंड करता है, तो काफी सिंपल है. जितना ज्यादा थ्रस्ट होगा, मतलब जितना ज्यादा F ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा. क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यूमरेटर में. सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इफ फोर्स or you can say the thrust increases, then pressure also increases. लेकिन अगर ध्यान से देखो, एरिया डिनोमिनेटर में है और प्रेशर यहाँ हमारा न्यूमरेटर में है, अदर साइड ऑफ द इक्वेशन. सो इसका मतलब प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफ दिस थ्रस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. तो इफ एरिया ऑफ द सरफेस इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस. उल्टा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड इफ एरिया ऑफ द सरफेस डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर तुमसे कोई बोले कि तुम सेम फोर्स है लेकिन तुम्हें प्रेशर को कम करना है, प्रेशर, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं सुनो. इफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इफ फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सरफेस के ऊपर जो एरिया है, सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है उसको तुम्हें कम करना है. सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है उसको तुम्हें कम करना है, यू हैव टू डिक्रीज द प्रेशर. देन तुम एरिया को इंक्रीज कर दोगे. क्यों? क्योंकि प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो लिखो, इफ फोर्स यानी एफ जो थ्रस्ट है, if the thrust F remains constant, if thrust F remains constant, यानी ये constant हो गया, then what can we say? Then we can say that P is inversely proportional to A. इसे ही हम inversely proportional को mathematically ऐसे लिखते हैं, P then proportionality sign 1 upon A, means if pressure has to decrease, then area has to increase. If pressure has to increase, area has to decrease. उल्टा. ठीक है. तो अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेज और अदर वे, एक तरीका बताओ, वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, तो तुम क्या बोलोगे? प्रेशर इंक्रीज करना है यानी एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा. रेड लिखो. अगर हमारा थ्रस्ट कांस्टेंट है तो उस केस में मैं बोल रहा हूं, अगर हम फोर्स को नहीं चेंज करेंगे, लेकिन फोर्स को बिना चेंज किए हुए ही हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, सिर्फ हम एरिया को डिक्रीज कर देंगे. तो लिखो, फॉर द गिवन थ्रस्ट मींस द थ्रस्ट इज कांस्टेंट. फॉर द गिवन थ्रस्ट, द प्रेशर ऑन अ surface is increased by
reducing the area of the surface. ठीक है, एरिया को हम reduce या decrease कर देंगे, एरिया ऑफ द सरफेस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा पूछा जा सकता है दैट फॉर अ गिवन थ्रस्ट हाउ कैन यू इंक्रीज द प्रेशर ऑन अ सरफेस, दिस इज द आंसर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बोल दिया, अब इसका प्रैक्टिकल यूज होता है चिल्ड्रन, प्रैक्टिकल यूज होता है कैसे? जैसे तुम्हारे पास एक नेल है, दिस इज अ नेल, एंड से दिस इज अ ब्लंट नेल, and then you have another similar kind of nail same size का, but it has a sharpened tip, इसका जो टिप है काफी नुकीला है। तो ये है पहला वाला जो मैंने बनाया है, दिस इज द ब्लंट वन, एंड ये वाला शार्पेंड टिप है, शार्पेंड वन, वेरी शार्प टिप, ठीक है। तो इसको और मैं क्लियरली बना देता हूं ताकि देखने में ये लगे कि ये शार्पेंड टिप है। हाँ, अब देखो इस इन दोनों नेल्स को, सपोज यू हैव टू हैमर them into the wall, and the wall is same wall in which you have to hammer both of these nails। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे हैमरिंग करोगे, सपोज तुम दोनों नेल्स पे सेम अमाउंट ऑफ थ्रस्ट से हैमरिंग कर रहे हो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हो। सपोज यू आर अप्लाइंग अ 50 न्यूटन ऑफ फोर्स on this hammer, on this nail, and 50 Newton of thrust, perpendicular force on this nail as well। तो दोनों में तुम्हारा सेम फोर्स, सेम थ्रस्ट लग रहा है, यानी गिवन थ्रस्ट, सेम थ्रस्ट, कांस्टेंट थ्रस्ट, दोनों में सेम है। बट यू विल फील दैट द प्रेशर जनरेटेड in this sharp nail would be more, and therefore it would be easier for you to drive the nail into the wall। लेकिन blunt वाला जो nail है, you will feel that it is not getting into the wall so easily because the pressure generated in this nail would be less। तो जहां ज्यादा प्रेशर डेवलप हुआ वही नेल इजीली अंदर घुस जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि फोर्स तो तुमने दोनों में सेम लगाया, इसमें भी उसमें भी, लेकिन इसमें प्रेशर डेवलप्ड और प्रेशर जनरेटेड इज मोर, और यहां पे pressure is less, the pressure developed is less, and hence the you are unable to make this nail penetrate into the wall easily, the blunt one, but the sharp one gets easily penetrated because the pressure developed there is more। क्यों pressure developed is more? Why the pressure is more? Because the area of the tip is less। कंपेयर करो टिप का जो एरिया, जिस सरफेस पर एक्चुअली द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, कौन सा सरफेस ऑफ कांटेक्ट है वॉल के साथ, यही वाला टिप ऑफ द नेल इज द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो देखोगे ब्लंट नेल का जो एरिया है, जो सरफेस है उसका जो एरिया है, इट इज मोर, और एक एकदम शार्प टिप है, इसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, दिस एरिया इज लेस, द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज लेस। तो एरिया कम है इसलिए प्रेशर मोर, ज्यादा प्रेशर हुआ। यहाँ एरिया ज्यादा है इसलिए प्रेशर कम है, क्योंकि एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। यही थियोरेटिकली भी हमने अभी अभी पढ़ा, प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए सो दैट विद द गिवन थ्रस्ट, दोनों ही सेम 50 न्यूटन से, with the given thrust we are able to produce more pressure when the area of contact is less। ये हो गया प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, बस तुम लोग लाइफ में यूज भी करते हो। तो चलो, अब कुछ इस तरह के रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस अगर पूछे जाएंगे तुम आंसर कर सकोगे। लेट अस डिस्कस अ फ्यू ऑफ देम। ओके, राइट डाउन एग्जांपल्स। तो अभी अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो लिखते हैं सबसे पहले। द एंड्स ऑफ नेल्स, या फिर टिप्स लिख सकते हो, द टिप्स ऑफ नेल्स और पिंस, पिन का भी सेम ही है, आर मेड पॉइंटेड, are made pointed means they are sharp tip, they have a sharp tip, so that
large pressure is exerted at the pointed tips and they can be driven into with less effort. Driven into with less effort. एक और एग्जाम्पल देखो, कटिंग टूल्स जिसे जैसे हो गया शार्पेंड नाइफ या फिर एक ब्लंट नाइफ, दो नाइफ ले लो तुम, चाकू। तो तुम देखोगे द शार्पेंड नाइफ कैन कट द फ्रूट मोर इजीली देन अ ब्लंट नाइफ। तुम दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के देखना, देखोगे कि ब्लंट नाइफ से फल काटना डिफिकल्ट है, बिकॉज इवन इफ द फोर्स exerted on both of the knives are same, the pressure developed on both of the knives are different. The blunt knife has more area of contact, so it produces less pressure, while the sharpened knife has a lesser area of contact and thus it produces more pressure, although the force, the thrust exerted on both of the knives are same. ये भी एक इसी का एग्जांपल है। Write down the cutting tools, and this is not only with knives, it is with any cutting tool. Okay, so the cutting tools have sharp edges so that even a small thrust may cause a great pressure, a large pressure at the edges, and cutting can be done with a less effort, and cutting can be done with a less effort. Correct? कोई तुमसे अब पूछे कि वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर, अभी अभी हमने पढ़ा वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर, अब वे ऑफ डिक्रीजिंग प्रेशर बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एरिया को इंक्रीज कर देंगे, तभी हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दोनों सेम ही है, बस उल्टा है। सो राइट डाउन, दिस कैन ऑल्सो कम एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे ऑफ decreasing the pressure. For the given thrust, the pressure on a surface is reduced, या फिर it is decreased by increasing the area of surface. By increasing the area of surface. इसके भी कुछ examples लिख लो। अभी अभी हमने examples लिखा, how to decrease the, how do we decrease the area to increase the pressure। ये जो दो examples हमने लिखा, इसमें हमने pressure को increase कैसे करना है वो लिखा है ना, how to increase the pressure वो लिखा है। तो हमने एरिया को डिक्रीज किया। अब हम लिखेंगे कि हमें प्रेशर को डिक्रीज करना है, कई बार हमें प्रेशर को डिक्रीज करना होता है तो हम एरिया को बढ़ा देते हैं। लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट हैव सीन दैट ये जो रेलवे लाइंस होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, सपोज ये दो पैरेलल रेलवे ट्रैक्स हैं, इन बिटवीन यू मस्ट हैव सीन वुडन स्लीपर्स, यू नो वुडन फ्रेम्स, इस तरह का वुड का फ्रेम्स होता है कनेक्टिंग देम, वुडन स्लीपर्स बोलते हैं। Why these wooden sleepers are placed? Yes, to increase the area of contact of the rails with the ground। ये ग्राउंड के साथ ये जो रेल्स का कांटेक्ट होता है उसके बीच में हम ये वुडन स्लीपर्स डाल देते हैं। सपोज दिस इज द रेल एंड यहाँ पर हमारा वुडन स्लीपर रहता है एंड फिर ये ग्राउंड रहता है, तो रेल और ग्राउंड के बीच में ये वुडन स्लीपर रहता है एंड दीज आर क्वाइट वाइड एनफ।
तो ये क्या करता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द रेल एंड ग्राउंड को बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एज अ रिजल्ट इट डिक्रीजेस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड। तो इसमें से इस रेल के ऊपर से भारी ट्रेन जाएगा, अ हैवी ट्रेन वुड रन ऑन द रेल एंड इट वुड जनरेट अ ग्रेट प्रेशर ऑन द ग्राउंड। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज ना करें तो ये रेल ट्रैक ग्राउंड के अंदर धंस जाएगा। The rail track would go into the ground because of the high pressure generated due to the weight of the train. तो I need to decrease the pressure. I cannot change the weight of the train ना, मैं चाहकर भी उसमें ट्रेन तो भारी ही होगा। मैं मतलब जो वेट ऑफ द ट्रेन है, जो थ्रस्ट है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो भारी ही होगा। फिर भी हम प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द रेल एंड area of contact of the rail with the ground, and this is done by placing the wooden sleepers. इससे क्या होता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाता है, प्रेशर ऑन द ग्राउंड डिक्रीज हो जाता है। राइट डाउन दिस एग्जांपल। वाइड वुडन स्लीपर्स, वाइड मतलब काफी चौड़े, वाइड wooden sleepers are placed below the railway tracks so that the pressure exerted by the iron rails on the ground decreases. On the ground decreases so that this pressure decreases. Very simple. Now, another example you write down the foundations of buildings. Once you write this, I will explain. The foundations of buildings are made wider than the walls. Than the walls, so that the pressure exerted by the building so that the pressure exerted by the building on the ground becomes less. On the ground becomes less. Kitna simple sa hai. You must have seen that whenever there is a construction of a building going on, the foundation of the building is made very thick. और इसके ऊपर जो वॉल होता है वो कंपैरेटिवली पतला होता है। ये हो गया वॉल, but the foundation is made quite thick. The reason is, with a thicker foundation, we are giving a larger area of contact with the ground. The larger area of contact with the ground makes the pressure decrease. ये बिल्डिंग काफी बड़ा बिल्डिंग बनने वाला है. The building is very heavy, so the weight of the building can produce a large pressure on the ground, and due to which the building may get into the ground. To avoid that, we should decrease the pressure, and to decrease the pressure we are increasing the area of the contact, that means the area of the foundation. तो यही लिखा हुआ है यहाँ, सिंपल सा है, very simple. I hope you are getting the concept of area, thrust and pressure. ठीक है? Now let's just see a particular diagram and एक concept तुम्हारा clear होगा. मैं यहाँ पर एक ब्रिक बना रहा हूँ, ठीक है? मान लो कि एक ब्रिक है या कोई भी ब्लॉक है, वुड का है, आयरन का है, या ब्रिक ही है, doesn't matter, and you try to get the concept clear. Say this is a brick, okay, rectangular brick, and say this is 5 centimeters, this is 10 centimeters, and say this one, this height here
is 20 centimeters. So this rectangular block has dimensions 5 centimeters, 10 centimeters, 20 centimeters. तुमने इसको ग्राउंड पे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। अब ये सेम ब्लॉक को अब मैं इस तरह से रख रहा हूं. दिस इज द सेम ब्लॉक एंड नाउ आई एम प्लेसिंग इट इन दिस मैनर, प्लेसिंग इट इन दिस मैनर. दिस इज नॉट अ डिफरेंट ब्लॉक. तुम देखोगे कि इसको हम बस इसका पोजीशन, द वे ऑफ कीपिंग, इसको चेंज कर दिया. ऑलराइट, तो दिस वाज 5 centimeters, this height. This is the 10 centimeter, and this one is 20 centimeters. देखो डायमेंशंस चेंज नहीं हुए हैं, दोनों सेम ब्लॉक ही है. बट you tell me whether, my question is think and decide children, and then I'll tell the answer also, and then you will also check whether you have thought correct or not. First question is, will the thrust generated, thrust exerted, will the thrust exerted in both cases be same? Thrust exerted in both, will they be same or not? थिंक, क्या दोनों का थ्रस्ट सेम होगा? थ्रस्ट का मतलब फोर्स की मैं बात कर रहा हूं. इफ यू हैव थॉट yes, if your answer is yes, then your answer is correct. Yes, the thrust will be same. क्यों? Thrust is the weight. Thrust means the weight of the block. Thrust is force, weight is force. So इसका जो weight है वो किसी भी तरह मैं उसको रखूं वो चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है. इसका जो weight है ग्राउंड पर वो अगर 10 न्यूटन है तो ऐसे भी रखने पर उसका वेट 10 न्यूटन ही होगा. सो द थ्रस्ट एक्सर्टेड इन बोथ केसेस विल बी सेम. बट नाउ इफ आई आस्क यू, विल द प्रेशर exerted on the ground in both cases are the same or different? तो यहां पे होना चाहिए no, they are not same, not same but different. but different. क्यों different children? क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट दोनों का डिफरेंट है. तुम अगर ध्यान से देखो तो ये जो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस, इसको मैं अगर डायग्राम को क्लियर करूं, फर्स्ट केस है उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड के साथ वो ये वाला एरिया ऑफ कांटेक्ट है, यानी 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर. तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट. सपोज दिस इज केस ए एंड दिस इज केस बी, ठीक है. तो केस ए में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, द एरिया ऑफ कांटेक्ट है दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और केस बी में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो, ध्यान से अगर देखो इस फिगर को मैं अगर तुम्हें क्लियर कर दूं तो ये वाला जो एरिया है ना वो है एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज द एरिया. सो 20 इंटू 10 इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट. तो सेम वेट बट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ कांटेक्ट. तो ऑब्वियसली केस बी का एरिया ज्यादा तो केस बी में प्रेशर कम. सो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन बोथ ग्राउंड इज नॉट सेम. केस ए का जो प्रेशर है, केस एज प्रेशर इज मोर देन केस बी का प्रेशर. The pressure developed in case A is more than the pressure developed in case B. क्यों? क्योंकि केस A का एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, केस B का एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम. ये एक कॉन्सेप्ट था, ये एक कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि आजकल देखोगे तुम्हारे एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है, मींस कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. ताकि ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लैरिफाइड रहे, इसलिए मैंने ये इस तरह से इस कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया, ठीक है. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस चैप्टर एंड यू आर टेकिंग डाउन द नोट्स. प्लीज लाइक द वीडियो and subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. Thank you children, God bless you, and we will meet in the next upcoming lecture.